दोस्तों, hello boys and girls. So as you can see that I am driving 2023 the Toyota Fortuner diesel automatic. So I am sitting in a commanding position. सामने देखो इस लोगों को कितना छोटा लग रहा है यार इस गाड़ी के सामने. So yes, आपको इस गाड़ी में मिलता है टोटल 7 वेरिएंट्स. That is 4x2 manual petrol, 4x2 automatic petrol, 4x2 manual diesel, 4x2 automatic diesel and 4x4 ऑप्शन में आपको मिल जाता है टोटल 2 वेरिएंट्स. वन इज़ द मैनुअल एंड अनदर वन इज़ द ऑटोमेटिक. एंड एडिशनली आपको और एक वर्जन मिलता है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड दैट इज़ द GRS एडिशन विच इज़ कॉल्ड एज स्पोर्ट्स वर्जन ऑफ दिस कार. एंड इसका जो इंजन स्पेसिफिकेशन है वो है सेम ही है बट आपको वो मिलेगा 4x4 डीजल ऑटोमेटिक में. एंड उसका कलर कॉम्बिनेशन है एक ही मिलेगा शायद से एंड दैट इज़ रेड एंड ब्लैक ड्यूल टोन कलर. ओके, anyways, the car I am driving right now, it is 4x2 automatic diesel. So let's take a U-turn first. इसका U-turn एक्चुअली बहुत जगह लेती है यार. Anyways, so yes, where I was, yeah. So to talk about the power figure, so this car is coming with 2.8 liter of engine which is producing 201.15 bhp of maximum power at 3000 to 3400 rpm and 500 newton meter of maximum torque at 1600 rpm to 2500 rpm. So obviously these power figures are in pen and paper. Okay. And let me remind you one thing that you are driving a Toyota Fortuner. So एक भारी भरकम सा गाड़ी है, ठीक है. तो ऑब्वियसली इसका जो पावर फिगर है ये पेन एंड पेपर में ही है बट जब आप गाड़ी को चलाओगे तो आपको थोड़ा सा पावर डिलीवरी लीनियर लगेगा. एंड स्पेशली इफ़ यू आर राइडिंग दिस कार इन normal mode or let's say in eco mode. Okay, to talk about that you will get total 3 modes. One is eco, another one is the normal mode or I don't know exactly what it is called, and last one is the sports mode. So नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बट स्टिल मैं बोलना चाहता हूँ कि इको मोड में आपको इसका फ्यूल जो माइलेज है थोड़ा अच्छा खासा मिलेगा एंड स्पेशली यू कैन यूज़ इट इन अ डेली टू डेली लाइफ और यू कैन यूज़ इट इन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक लाइक दिस इन कोलकाता. Okay, so you can drive this car in a normal mode as well where you can expect a decent amount of power and also you can save some fuel. But although I am not driving this car in a normal mode, okay, because I don't have that chance to do so, so you can expect a decent amount of mileage, at least in a double digit in normal mode. But yes, obviously you can understand the price of the petrol. Now it is 100 plus, so you will get a mixture of power and economy as well. But I have driven this car in eco mode and sports mode, ठीक है. बट हाँ, अगर आप स्पोर्ट्स मोड में चलाओगे तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा माइलेज के साथ. बट दिस कार इज़ कॉस्टिंग अराउंड 50 lakhs. सो ऑब्वियसली आप अगर इस गाड़ी को लोगे भी तो आप ऑब्वियसली माइलेज के बारे में आप सोचोगे भी नहीं. इट्स क्वाइट ऑब्वियस, राइट. सो नाउ बात करते हैं पावर की. तो मुझे थोड़ा सा इसका एज आई हैव सेड कि मुझे थोड़ा लीनियर पावर डिलीवरी लगा. हालांकि आई वॉज ड्राइविंग द कार इन स्पोर्ट्स मोड एंड इन इको मोड. आई नेवर ड्रिवन दिस कार इन अ नॉर्मल मोड. ओके, सो फिलहाल मैं हूँ अभी इको मोड पे एंड हालांकि सिटी के अंदर इको मोड में चलना इट्स क्वाइट ओके बट इफ़ यू आर ड्राइविंग दिस कार एंड इफ़ यू रियली वांट टू गेट अ actually fun out of it, then definitely I would recommend you to drive this car in sports mode. Obviously you need, as I have said, that you need to compromise with the mileage. So जब हम पावर की बात कर रहे हैं तो obviously I need to tell you the top speed of this particular vehicle. So you can go up to 190 km/h but it is not feasible to drive
any car into that speed. हालांकि I have seen so many videos where the Fortuners are driven up to 160, 170, 180 even I have seen in YouTube videos, but I would recommend you to drive this car in a decent speed, and which is the controllable speed for this car, and that is 90 to 130, which is easy achievable as well if you are riding this car in a open highway. So you can ride this car up to 130 km/h easily. Now बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की. Obviously, well, when I was talking about the top speed or speed as well, so I need to discuss about the stability, which is also a important thing, right? So ये गाड़ी एक्चुअली चिपक के चलती है because of the width of this car and height of this car and as well as the wider tire. तो आपको कभी भी आपको एज सच महसूस नहीं होगा कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है अगर आप गाड़ी को 100 and 130 के आसपास चला रहे हो, बिकॉज आई हैव रिडन दिस कार इन हाईवे एज वेल, ओके, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे उतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ कि गाड़ी कब 100 क्रॉस कर गया. बट हाँ, 130 के बाद मुझे थोड़ा सा महसूस होने लगा क्योंकि गाड़ी में एक्स्ट्रा पावर मांग रहा था. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट to ride this car. Maybe I'm not that much expert to drive the car over 130, but I feel that from the way I'm driving it is going out of my hand. Okay, so I was little bit scared to give the hard acceleration. So अगर मैं बात करता हूँ स्टेबिलिटी की, इवन दो द कार्स ग्राउंड क्लियरेंस इज़ 225 मिलीमीटर, गाड़ी में आपको अच्छा खासा स्टेबिलिटी मिलेगा एज आई हैव सेड बिकॉज ऑफ द वाइडर टायर एंड विथ ऑफ दिस कार. हाँ, अगर इनसाइड द केबिन अगर मैं स्टेबिलिटी बोलूँगा तो ऑब्वियसली गाड़ी में बॉडी रोल मुझे मिला. ऑब्वियसली गाड़ी ऑब्वियसली यू आर ड्राइविंग एन SUV कार, राइट, सो बॉडी रोल आपको महसूस होगा. बट अगर मैं इसका ओल्डर जनरेशन के साथ अगर मैं कंपेयर करूँगा तो बॉडी रोल कुछ हद तक मुझे कम भी महसूस हुआ. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसका जो सीट है, जो सीट आपको अच्छे से जकड़ के रखती है, तो आपको वो बॉडी रोल महसूस मुझे उतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ. So when I'm talking about the seat, so obviously I need to tell you I am getting the proper under thigh support into this car. हाँ, मुझे कुशन थोड़ा सा हार्ड लगा, जो मुझे चुभ रहा था कुछ हद तक. इफ़ आई कंपेयर विद द MG Gloster का सीट मुझे थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हुआ. बट इस कार में भी अच्छा ही है, बट थोड़ा सा अगर सॉफ्टर कुशन मिलता तो मुझे लगता कि थोड़ा अच्छा हो जाता. बट गुड न्यूज़ इज़ दैट एटलीस्ट टोयोटा इज़ गिविंग द the ventilated seats, okay, for co-driver and driver, okay, and because obviously आपको पता है this car is costing around 50 lakhs and उस हिसाब से आपको गाड़ी में टेक्नोलॉजी नहीं मिलता है. ओके, सो फॉर एन एग्जांपल आप अगर देखोगे इंफोटेनमेंट डिस्प्ले कितना बेसिक सा लगता है, एंड आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले आपको मिलता है, बट स्टिल आपको वायर वाला मिलता है, वायरलेस आपको नहीं मिलता है. अगर सेंट्रल कंसोल की बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा लगता है मुझे एक्चुअली, ठीक है. बट हाँ, हालांकि आपका स्टीयरिंग में पैडल शिफ्टर भी दिया गया है. अगर टेक्नोलॉजी वाइज मैं बात करूँगा तो इस गाड़ी में बहुत कुछ चीज़ जो है वो मिसिंग है अगर कंपटीशन के बात करेंगे तो. बट फिर भी अगर मैं बात करूँगा कि अगर आपको एक नो नॉनसेंस सा कार चाहिए तो फॉर्च्यूनर इज़ ऑल्सो अ प्रैक्टिकल कार, व्हाट आई पर्सनली फील सो. ओके, नाउ अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आई नीड टू टॉक अबाउट द सस्पेंशन एज वेल. सस्पेंशन मुझे थोड़ा सा स्टीफर साइड लगा एज कम्पेयर टू ओल्डर जनरेशन, एंड because of that reason also when I was taking the car in a rough surfaces or patchy road, I feel the buzziness in steering and as well as in my seat. Okay, तो अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँगा, इसका स्टीफर सस्पेंशन होने का पीछे भी एक रीज़न है, एक साइंटिफिक रीज़न है. व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ऑफ द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ दिस व्हीकल 225 millimeter, so which is actually too much. Okay, अगर इसमें बाउंसी सस्पेंशन मिलता तो क्या होता कि हार्ड ब्रेक में या वाइल यू आर टेकिंग द यू टर्न, सो मे बी गाड़ी में उतना स्टेबिलिटी नहीं मिलता. एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड विद द स्कॉर्पियो, ओके, महिंद्रा स्कॉर्पियो. तो इसलिए इसका सस्पेंशन थोड़ा सा मुझे हार्डर लगा.
एंड मुझे लगता है ये फिजिबल भी है, देना भी चाहिए ये harder suspension, because Toyota is mainly known for the safety precautions. Okay, so to talk about the handling the car, here I am little bit disappointed. Why I am telling you, in 2023 where the car is costing around 50 lakhs, Toyota is still giving the hydraulic steering, and which is too much heavy man. आपको ये थका देगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपको थका देगी जब गाड़ी को आप चलाओगे कोई एक लाइक इन ए बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, और सपोज आपको ट्रिकी पोजीशन से आपको गाड़ी को निकालना है, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा मुशक्क़त करना पड़ेगा इस गाड़ी को उस पोजीशन से गाड़ी को निकालना। आप अगर चाहते हो कि गाड़ी को zigzag वे में निकालना, तो ये पॉसिबल नहीं है फॉर दिस कार। ओके, height, weight or width, length of this car is not the matter because of the steering, or the steering is the main concern for it. हाँ, MG Gloster को चलाना bumper to bumper traffic में is much more easy to drive than the Toyota Fortuner. Okay, so आप देख रहे हो, just now I have taken U-turn and how much I have given effort while I was taking the U-turn. Okay, and each and every moment आपको ये कार महसूस कराएगी कि आप एक भारी भरकम सा गाड़ी चला रहे हो। ठीक है, so now to talk about the ground clearance and all that, multiple occasions. So I need to tell you the water weighing capacity of this car. So it has the 700 millimeter of water weighing capacity like Thar and Gurkha. But let me tell you one thing, Thar and Gurkha is cheaper than this car. Okay, बट स्टिल थार एंड गुरखा को फैमिली कार के हिसाब से कंसिडर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सो उस हिसाब से इस गाड़ी को लेना एक प्रैक्टिकल डिसीजन है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, और अगर इसका कंपटीशन में बात करेंगे MG Gloster की, उसकी वाटर वेटिंग कैपेसिटी है 550 मिलीमीटर। Okay, and Scoda Kodiaq, as I have said earlier as well, which is not feasible to compare this car with Scoda Kodiaq, but still actually people are comparing this car with Scoda Kodiaq in YouTube. Then मैं अगर बात करूँगा कि इसका वाटर वेटिंग कैपेसिटी Scoda Kodiaq का, तो उसका है 330 मिलीमीटर, which is actually very less. Okay, तो एक फैमिली कार में 700 मिलीमीटर वाटर वेटिंग कैपेसिटी इज़ टू मच। आई नो दैट वी आर नॉट यूजिंग इट इन डेली टू डेली लाइफ, बट अगर खुदा ना खास्ता आपको ज़रूरत पड़ गया जहाँ पर आपको एक ट्रिकी पोजीशन में मेन हाईवे बंद है, आपको एक ऐसा जगह से गाड़ी को निकालना पड़ रहा है जहाँ पर पूरा कीचड़ है या पानी है, तो आपको आराम से इस गाड़ी को निकाल सकते हो। एक्चुअली यू कैन क्लोज योर आइज एंड टेक दिस कार, सो फ्रॉम एनीवेयर, जहाँ पर रास्ता नहीं है वहाँ पर भी ये गाड़ी रास्ता बना देगी, जस्ट लाइक थार। ठीक है, बट थार एंड गुरखा, एज आई हैव सेड, इट्स नॉट अ फैमिली कार। ओके, सो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो एन अनदर थिंग विच आई नीड टू हाईलाइट। ओके, 4x4 लेना है या 4x2 लेना है, दैट्स अप टू यू, बिकॉज आई हैव आस्क्ड सो मेनी पीपल दैट वेदर टेकिंग अ 4x4 car is okay decision or not. That person was telling me that it is completely optional. In 6 months maybe he was using 2 or 3 occasions, or even sometimes they are not even using the 4x4 option. Okay, so because of the height or huge torque of this particular car. So whether it is really feasible to pay 50 lakhs for this car, so I'm gonna tell you definitely, and while I was going back to home. Hello guys, as you can see that I'm back at home, and now I'm gonna tell you that is it really feasible decision to buy Toyota Fortuner in 2023 or not. Okay, 50 lakhs is not a small amount of money. Okay, so अगर मैं बात करता हूँ इस गाड़ी के साथ अगर दूसरा कौन सा गाड़ी अवेलेबल है now in Indian market. So first of all, the first car which is available in Indian market, and that is the Scoda Kodiaq. हालांकि actually in YouTube you will get so many comparison videos Scoda Kodiaq with Fortuner, but it is not feasible because Scoda Kodiaq actually एक family car है, and which is having the 7-seater and which is having the sunroof and all that, and so many new features adding on it. अगर मैं बात करूँगा इसका comparison और सही comparison, so definitely I will suggest you to go with the MG Gloster. अब बात करते हैं कौन सा ले, MG Gloster
और फॉर्च्यूनर। ओके, जी ग्लॉस्टर में आपको भर भर के फीचर दिया जाता है। उसका अगर इंस्ट्रूमेंट पैनल देखोगे वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ी एक टच स्क्रीन डिस्प्ले है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको भर भर के फीचर्स मिलता है, एंड ऑब्वियसली सनरूफ भी आपको मिलता है, एंड दैट इज ऑल्सो अ पैनोरामिक सनरूफ विच इज एक्चुअली प्रैक्टिकल इन दिस प्राइस रेंज। एंड अगर मैं जर्नी की बात करूंगा और ड्राइविंग क्वालिटी की बात करूंगा तो MG ग्लॉस्टर इज obviously it's a good car. Okay, उसका सीटिंग कंफर्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा while I was driving the car in city like Kolkata, so it was actually a good car to drive within the city. But अगर Fortuner की बात करेंगे तो Fortuner is completely different altogether. Fortuner यहाँ पर खेलती है reliability के साथ. I have seen so many Toyota Fortuner which already clocked around 2.5 lakh, 3 lakh up to. और अगर आप देखोगे टोयोटा का कोई भी गाड़ी जैसे टोयोटा इनोवा, those who are actually used as a taxi in the hilly areas, एंड वो गाड़ी एक्चुअली चलता है लगभग 3 लाख किलोमीटर, 4 लाख किलोमीटर तक भी मैंने देखा है बहुत सारे इनोवा को चलते हुए। सो नॉट ओनली द रिलायबिलिटी, उसके साथ साथ आपको मिल जाती है वॉइस कंट्रोल, EBD, क्रूज कंट्रोल, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच एक्चुअली टोयोटा इज ऑफरिंग यू इन दिस कार। सो आप अगर गाड़ी को यूज करोगे डेली टू डेली लाइफ में, फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग फॉर ऑफिस और इफ यू आर गोइंग फॉर लॉन्ग टूर, सो दिस आर द स्मॉल थिंग्स व्हिच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन डेली टू डेली लाइफ। बट अगर मैं बात करूंगा फॉर्च्यूनर की, तो फॉर्च्यूनर में आपको मिलता है सब माचो सा स्टंट्स जो एक्चुअली समहाउ आई फील कि MG ग्लॉस्टर में मिसिंग है। हाँ, एक गाड़ी एक्चुअली इसको सही मायने में कंपीट कर सकता था, चाहे वो फीचर हो, चाहे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो लुक हो, चाहे वो टायर हो, चाहे वो स्टंट्स हो, एंड वो है फोर्ड एंडेवर। फॉर्चुनेटली फोर्ड एंडेवर इज नॉट अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। हाँ, अगर आप टोयोटा के साथ जाते हो इसका सर्विस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, हालांकि MG ग्लॉस्टर का ऐसा सच नहीं है। नाउ आई विल लीव इट अप टू यू दैट व्हिच वन एक्चुअली यू शुड गो विद, द फीचर ओरिएंटेड कार or a practical, reliable car. The decision is all yours. So that's all about this video, guys. So I have to take a sweet albida. So if you have any questions about this particular car, so please contact with me in my Instagram page, and that is the Bangalorean Bong. And you can also follow me in my Facebook page as well, and that is also the Bangalorean Bong. And yes, don't forget to subscribe my channel, that is the Bangalorean Bong, and hit the bell icon so that you will get the earliest notification if I'll upload any video for that matter. So that's all from my end, guys. I have to take a sweet little business. So till then, take care, bye bye, have blast, and drive safe, and wear seatbelt while you are driving, and also wear helmet while you are riding the bike. So that's all.